So in today's session we will complete the chapter states and union territories. So this is quite a factual chapter. You have to remember a lot of facts, so we will just go through the fact in the from the prelims perspective. Okay, so because ethru tomar prelims re question asi jai pare just factual jinsa guda, to just thore dekhi daba. Ethre states and union territories are dealt with under part 1 article 1 to 4 of the Indian Constitution. So Article 1 says India, that is Bharat, is a union of states. Alright, so this union, this Indian Union comprises of the states only. States only, the territory of states only. Okay, now Schedule 1, it lists the states plus territorial jurisdiction. So what is the territory of India and what is the Union of India? Territory idea आमे देखिबा या परे जस्ट गोटे दुटा पेज पर, एंड यूनियन ऑफ इंडिया that deals with the territory of states only. Please note this intricacy. Okay, India, that is Bharat, is a union of states, but Schedule 1 रे तमरो both state territory भी अच्छी आ अलगा territory भी ऊपर मेंशन करा हैछि, that is Schedule 1. All right, so territories, states, how many states are there? There are 28 states till date. India is a federal system with the 7 schedule. 7 schedule रे तमरो पावर का डिवीजन कराई जी. 7 schedule रा आर्टिकल इज आर्टिकल 246. रिमेंबर दिस पॉइंट. एंड 7 schedule रे तमरो तीनटा लिस्ट पावर डिवीजन कराई जी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट. तो बहुत जगह बहुत कन्फ्यूजन अच्छी, तो को लिस्ट रे केतेटा आइटम अच्छी. तो लक्ष्मीकांत रे जोटा देखाई जी सेटा ही तुम फाइनल मान. यूनियन लिस्ट हैज 98 सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट हैज 59 सब्जेक्ट एंड कनकरेंट लिस्ट हैज 52 सब्जेक्ट. सो यही जिनटा ही फाइनाल धर तुम स्टेट लिस्ट रे 59 सब्जेक्ट अच्छी, कनकरेंट लिस्ट रे 52 सब्जेक्ट अच्छी, टोटाल 111 सब्जेक्ट अच्छी. स्टेट लिस्ट रे अधिका सब्जेक्ट अच्छी, कनकरेंट लिस्ट रे कम सब्जेक्ट अच्छी, आउ यूनियन लिस्ट रे तुम 98 सब्जेक्ट अच्छी. तो टोटाल तुम 209 सब्जेक्ट 7 schedule रे अच्छी. ओके, ये जिनटा ही तुम फाइनाल मान. ओके, सो देखो क्वेश्चन पचार देता तुम OCS 2023 रे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर not correct with respect to union list of 7 schedule of the Indian Constitution. There are 100 subjects in the list, so this is not correct. तो ये आंसर आसीबो बट देखो ऑप्शन रे टिके गड़बड़ हेची. So union list, this union list signifies cooperative federalism. So this is not the case. Union list रे सही आइटम स्पेसिफाई कराई छी जोठी केवल यूनियन रही लॉ कर परिबो. So that is not a sign of federalism. That shows the unitary nature of Indian government. Okay, so the two option is wrong. There are 15 subjects in the union list on which parliament has exclusive power to levy taxes. एटा परीक्षा हॉल रे करबा बहुत कष्ट एई स्टेटमेंट बट ठीक अछि. तो एटा हमर आंसर हबनी. Okay, there are 15 subjects. ये जिनटा खाली मन रख देता, but this will be very difficult to recall in the exam hall. Supreme Court has no jurisdiction over matters in union list. Okay, so this is wrong because judicial review is a basic structure of the constitution. So option 4 तो पूरा wrong ही, option 1 भी wrong अच्छी, बट नॉट करेक्ट पचार. तो जब 1 to 4 देता सेटा आम आंसर होता, बट एमती 1 to 4 ना. तो ऑप्शन 4 आम जान डेफिनेटली रॉन्ग. तो ऑप्शन 4 तुम बी आउ डी भितर कोटा गोटे आंसर हम. OPSC डी को देछि बिकज 2 टा होची यूनियन लिस्ट डज नॉट सिग्निफाई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, दैट इज ट्रू. बट तुम जदि लक्ष्मीकांत को देखियो तुम बी भी ऑप्शन हो पार. यहाँ तो क्वेश्चन OPSC सॉल्यूशन तार छाड़ी, तो यहाँ देखिए जना पड़ो OPSC कोटा कनसीडर कर. बट फॉर द टाइम बिंग तुम लक्ष्मीकांत जोटा देछि देयर आर 100 सब्जेक्ट्स इन द यूनियन लिस्ट, देयर आर 98 सब्जेक्ट्स इन द यूनियन लिस्ट, कंसीडर दैट टू बी फाइनल. ओके, सो यूनियन टेरिटरीज टिल डेट 8टा अच्छी. दे आर डायरेक्टली अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट. एक्वायर टेरिटरीज सेंटर ही एक्वायर कर टेरिटरीज. फॉर्मर यूनियन टेरिटरीज आर हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, गोवा. एम फॉर्मर यूनियन टेरिटरीज एवं स्टेट हो गलानी. सो व्हाई वी नीड यूनियन टेरिटरीज? फॉर देयर डिस्टिंक्ट कल्चरल strategic importance, for separate political and administrative administration. So that's why we need union territories, because तांगर किछि गोटे सेपरेट जिनस अछि जोटा कि प्रिजर्व करिया दरकार. सो से यूटी स्टेटस दिया है. एंड यूटी इज विथ हाई कोर्ट. Delhi is UT with a separate high court. There is common high court for Jammu Kashmir and Ladakh. Okay, this is a fact. Just constitutional provisions. Article 1 defines the name and territory of the union. Okay, the India, that is Bharat, shall be a union of states. Okay, that is Article 1. Article 2, admission and establishment of new states. Article 2A,
2A was repealed when 2A was introduced with the 35th Amendment Act, but it was later repealed with the 36th Constitutional Amendment Act when Sikkim became a state of the Indian Union. Okay, so Article 2A এটা repeal ହେଇ ସାରିଛି under 36th Constitutional Amendment Act. 35th Amendment Act 2A को introduce କରାଯାଇଥିଲା, 36th ତାକୁ repeal कर दिया गला. Okay, Article 3 formation of new states and alteration of area and boundary names. Okay, तो गोटे जिनस देखियो Article 2 रे भी new states ऊपर डील करूची, Article 3 भी new states ऊपर डील करूची. So Article 2 deals with addition of completely new states. Completely new states including acquisition also. Acquisition रे भी जो स्टेट गुड़ा को आना जीवो ताको भी डील करे Article 2, but Article 3 deals with internal readjustment. Internal readjustment. So that is the difference. Okay, Article 3 formation of new states, alteration of area, boundaries and names of the internal of the states that already exist. Okay, तो से नुआ स्टेट तैयारी करिया पई तुमको गोटे बिल पास कर पार्लियामेंट रे. दिस बिल नीड्स प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन. प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन से बिल फ्लोट करा जिवो. आ प्रेसिडेंट रिकमेंड कला पूर्व ही शुड कंसल्ट विथ द स्टेट लेजिस्लेचर. ही और सी शुड कंसल्ट विथ द स्टेट लेजिस्लेचर, बट द स्टेट लेजिस्लेचर मान व्यू इज नॉट बाइंडिंग. अगेन तांको किसी टाइम लिमिट भी नहीं. ओके, सो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट कैन अल्टर द स्टेट्स देयर एरिया, बाउंड्रीज एंड नेम्स with a simple majority. Okay, but in case of union territories, no consultation is needed. Parliament can act independently. No presidential consultation is needed for union territories. Article 4 specifies that the laws under Article 2 and 3 to amend the first and fourth schedule territories and fourth schedule Rajya Sabha seats, to amend the first and fourth schedules and also the supplemental, incidental and consequential matters. Okay, 2 and 3 रे जहाँ भी चेंज करा जीवो ता सांगरे किछि जदि added provision आस्थियो, किछि जदि supplemental, incidental की consequential added provision जदि आसीवो तो से सबको Parliament can pass that by simple majority, and this bill is not considered as a constitutional amendment under Article 368. All right, so please note this. Article 2-3 रे जहाँ भी चेंजेस हो constitutional amendment दरकार नहीं. So states and UTs, union versus federation, India is not equal to not US. US was based on the agreement of states. The federation was formed by the agreement of the states. In India, no such agreement has been made. So in India, the states cannot secede away from the union. India is an indestructible union of destructible states under Article 2 and 3. But US, indestructible union of indestructible states. Okay, so if the states want to secede, okay, the state consent is needed. Okay, state manakar consent darkar, but जेहेतु तांकर civil war परे तांकर states माने union को आस्तले, so that's why their union is also indestructible. Okay, तमर आउ गोटे agreement करिकी states माने चाहिए secede कर परिबे union, and that will make another union of United States. Now Parliament authority, Parliament can create or alter states. Territorial integrity is not guaranteed, as you have seen. Territorial scope, see territory of India, Union of India आमे जेमते देखिले, Union of India deals with the territories of states only, but the territory of India deals with the territories of states, union territories plus future acquisition रे जदि कुछ territory आसला, that also. So idea of territory of India is greater than idea of Union of India. Okay, Union of India. So please note this thing. And Constitution provides no separate provision for acquired territories. Okay, Parliament may by law will decide what will happen with the acquired territories. Constitution is सेमती किसी separate provision mention करा जाई नहीं. Okay, now exchange of territories. So Parliament ର power अच्छे Article 3 रे, it can reduce a state's area but cannot cede to a foreign nation. Okay, so cede means cession. This idea of cession means to give up control over a territory as a part of a treaty or an agreement. Okay, जदि सेमती give up करिया को पड़िला कि surrender करिया को पड़िला territory, then that giving up will need a constitutional amendment. Okay, will need a constitutional amendment. But the boundary case रे जदि किसी executive action रे जदि किसी settlement हला,
settlement करागला between Indian government and the government of another nation, then that does not need a constitutional amendment in case of boundary disputes. तमें जदि executive action रे ही तमर जदि settlement कर दे पारिबो then constitutional amendment दरकार नहीं. But territory जदि तमें cede करियाउ चाहूचो कि surrender करियाउ चाहूचो, that needs a constitutional amendment. Okay, please note एटा Supreme Court in Berubari case has said that cession of Indian territory needs constitutional amendment. Again, Supreme Court in 1969 has said that in case of boundary disputes, executive action is sufficient for settlement of disputes. Okay, no amendment is required. Alright, तो जेतु सेशन constitutional amendment दरकार, तो 100th constitutional amendment 2015 रे transfer of enclaves between India and Bangladesh. Okay, तो इंडिया बांग्लादेश भितर कौन इश्यू होता? तो देखो रैडक्लिफ कमिशन 1947 रे इट ड्रू बॉर्डर्स एंड इग्नोर द एनक्लेव्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. ओके, तो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान भितर बॉर्डर तैयारी कराला इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान भितर. देन कम्स द बैग अवार्ड 1950, देन द नेहरू नोन एग्रीमेंट, दे डेल्ट विथ एनक्लेव्स. तो कौन होता ना रैडक्लिफ लाइन रे सपोज एटा बॉर्डर तैयारी कर देगला, यही पट्टा इंडिया यही पट्टा बांग्लादेश. तो कौन होता ना आगुरी ये जो इंडिया और बांग्लादेश राजा मैंने बेले बेले गैम्बलिंग करते जे तम एरिया सपोज बांग्लादेश राजा सी यही एरियाटा को बेट मारे, एरियाटा को बेट मारे जदि गेम रे बेट हारीगले देन यही एरियाटा इंडिया पाक पलैब. सेमती भितर किसी एरिया इंडिया पाक पलैब. सेमती बांग्लादेश राजा जदि किसी बेट जीतबे तो इंडिया भितर किसी एरिया बांग्लादेश पाक पलैब, तो इंडिया भितर किसी एरिया बांग्लादेश पाक पलैब. सो एमती दीज आर कॉल्ड एनक्लेव्स. ओके, ये जो छोट छोट एरिया एगुड़ा सब एनक्लेव था. तो रैडक्लिफ लाइन सेमती किसी न देखिकी मन इच्छा बॉर्डर टाणीदेले, बट ये बांग्लादेश किसी एनक्लेव इंडिया भितर रहीगला, इंडिया किसी एनक्लेव बांग्लादेश भितर रहीगला. ओके, सो दिस वाज द इश्यू. तो कौन होता ना एनक्लेव्स जोटा कि चितमहल कहला 111टा इंडियन एनक्लेव बांग्लादेश रही जाता, 51 बांग्लादेश एनक्लेव्स इंडिया रही जाता. तो ये जिनस को आड्रेस करने ये सब एग्रीमेंट सब होता. ओके, तो सुप्रीम कोर्ट इन बेरुबारी केस कहते जे जदि टेरिटोरी सीड करिया चाहूँ देन इट नीड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. बट जदि ये बाउंड्री डिस्प्यूट जदि किसी एनक्लेव मानक करने को चाहूँ माने एपट सेपट, तो इट डज नॉट नीड ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ओके, सो एक्वायर्ड टेरिटरीज सिंस 1950. ओके, बाउंड्री डिस्प्यूट रे सेटलमेंट जस्ट दरकार, इट डज नॉट नीड ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ओके, सो एक्वायर्ड टेरिटरीज इन 1950 दादरा एंड नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, पांडिचेरी एंड सिक्किम. एक्वायर्ड टेरिटरीज 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे एनेबल्ड बेरुबारी ट्रांसफर. ओके, बेरुबारी यूनियन रे बेरुबारी केस रे तुमर जेहेतु बेरुबारी को ट्रांसफर करिवार थिला टू बांग्लादेश. ओके, तो दैट सेट तुम 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एनाक्ट कराइला. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट एनक्लेव्स. नाउ चेंज ऑफ नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज अंडर आर्टिकल 3. ऑल नेम चेंज एग्जीक्यूटेड बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3. सो फास्ट होची तुम यूपी, लास्ट होची तुम ओडिशा. या भितर तुम सब अच्छी उत्तर प्रदेश ना होता फ्रॉम यूनाइटेड प्रोविंसेस, तमिलनाडु ना होता फ्रॉम मद्रास, कर्नाटक फ्रॉम मैसूर, लक्षद्वीप ना होता फ्रॉम लाकाडाई, मिनिकॉय एंड आमिंडीवी आइलैंड्स, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. ओके, redesignated in 1992 under 69th Constitutional Amendment Act. 69th Constitutional Amendment Act रे तमरो दिल्ली रो नेम को चेंज कराइतला नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. ओके, 69th Constitutional Amendment Act. Please remember this constitutional amendment. Uttaranchal was named to Uttarakhand in 2006, Pondicherry to Puducherry in 2006, and Odisha from Orissa in 2011. आओ एबे देखी दवा वेरियस कमिशन फॉर रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज. धार कमिशन, एसके धार कमिशन डिसेंबर 1948 आसला. इट रिकमेंडेड स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस बट नॉट ऑन लैंग्वेज. ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रिऑर्गेनाइजेशन हो पार. जेवीपी कमिटी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारामैया. ओके, तांकर कमिटी तापर धार कमिशन रेकमेंडेशन उपर प्रोटेस्ट है. तापर जेवीपी कमिटी आसला. दे ऑल्सो रिजेक्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन. बट इन October 1953 government created the first linguistic state, that is Andhra state, that separated Telugu speaking areas from Madras. Okay, now Fazal Ali Commission
accepted language as the basis. Again JPP committee पर भी protest हला, तापर फजल अली commission बसिला, फजल अली commission accepted language as the basis but rejected one language one state theory. Okay, तो language as a basis रे तुम state theory करी पारिबो, but one language one state theory टा वो justify से करलेनी. Okay, तांको recommendation फजल अली commission recommendation रे तम state reorganization act 1956 आस्थला. Okay, तांको recommendation रे 7th constitutional amendment act भी आस्थला in 1956. Okay, 7th constitutional amendment act रे this act abolished the part A, B, C states and also inserted article 350B. Article 350B deals with the special officer of linguistic minorities. Okay, with that came with the Fazal recommendation of Fazal Ali commission. So तापर स्टेट रिओर्गानाइजेशन एक्ट 1956 रे इट केम इनटू इफेक्ट इन नवेम्बर 1 1956. ई एक्ट अनुसार तुमर 14टा स्टेट और 6टा यूनियन टेरिटोरी क्रिएट कराला. ओके, तो ये कमिशन रो चेयरमैन फजल अली थे, KM पानिकरा, HN कुंजरू, देवर अदर 2 members of the commission. Okay, please note these names, ये टाइम में भी पचार दे पारे. Now comes the new states and UTs created after 1956. State Reorganization Act 1956. Maharashtra and Gujarat 1960 re. So bilingual Bombay state was divided into Maharashtra into Marathi speaking areas, Gujarat into Gujarati speaking areas. Gujarat became the 15th state of Indian Union. So Fazal Ali commission re 14टा states thela, तापर 15th state was Gujarat. Then Dadra and Nagar Haveli, the Portuguese ruled till 1954 and this Dadra and Nagar Haveli was self-administered till 1961. It became UT by a 10th Constitutional Amendment Act 1961. Okay, 2020 रे merger हो जाइथला. It combined Daman and Diu with Dadra and Nagar Haveli. Okay, with Dadra and Nagar Haveli, तो गोटे नुआ UT आसला Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. Okay, via merger of UT Act 2019. Okay, इतरे जम्मू कश्मीर को भी reorganization कराइथला. Goa, Daman and Diu. So this Daman and Diu and Goa was acquired from Portuguese by police action in 1961 under Operation Vijay. Operation Vijay 1961 re Goa and Daman and Diu were acquired from the Portuguese. It became union territory via 12th constitutional amendment 1962. तो गोटे जिनस देखियो जो मु कहली जेमती तुमर नुआ स्टेट आर्टिकल 2 रे तुमर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स पर स्टेट्स करा जीवो, न्यू स्टेट्स एक्वायर करा जीवो. आम आर्टिकल 4 रे भी पढ़ले दैट आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 रे जो भी रिओर्गानाइजेशन हबो दैट डू नॉट नीड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. बट एठी देख तुमर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होउजी, 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हेजी, 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हेजी, पॉन्डिचेरी सेंती 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हेजी. तो एटा कौन पाई हेजी, तो या पाई तुमर आर्टिकल 240 देखा पड़ो. ओके, आर्टिकल पार्ट 8 240. ओके, सो पार्ट 8 डील्स विथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज. आर्टिकल 240 कही पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशन फॉर क्रिएशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज. द प्रेसिडेंट मेक रेगुलेशन फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ यूटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड पौंडीचेरी. ओके, तो यही आर्टिकल को अमेंड करने यही सब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कराई. तुम फास्ट शेड्यूल रे हाँ एगुड़ा को इंट्रोड्यूस केवल करदे तो तुम मे भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दरकार हो ना. बट जेहेतु आर्टिकल 240 व्हिच इज ए कोर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू अमेंड दैट वी डिड दिस 10th 12th एंड 14th अमेंडमेंट्स. ओके, सो यहाँ मन रखिदेव 10 + 2 12 + 2 14th. फास्ट हूँ दादरा नगर हवेली, देन गोवा और दमन एंड दीव, देन पौंडीचेरी पुदुचेरी. Okay, so 12th Constitutional Amendment Act became UT. Goa became a state in 1987. Okay, Daman and Diu became a separate union territory. 2020 रे already हमें देखिलु जोड़ा जिनस. Okay, Daman and Diu plus Dadra and Nagar Haveli merged. Puducherry, it was a former French establishment, included Puducherry, Karaikal, Mahe and Yenam. एटा तोर इंडिया रा 4टा जगह रे जो पुदुचेरी रा स्टेट माने टेरिटरी डिवाइड होइतला. It was handed over in 1954 and it was administered as acquired territory by Union of India. But with 14th constitutional amendment it became Union Territory of India. Now Nagaland was carved from Naga Hills and Tuensang area of Assam. It was first placed under Assam governor and became the 16th state of Indian Union in 1963. Okay, so first 15th state एटा हला 1960 रे, तापर 3 वर्ष पर Nagaland became the 16th state of Indian Union in 1963 to satisfy the Naga movement. Then comes Haryana, Chandigarh and Himachal Pradesh. Punjab was bifurcated in 1966, another 3 years, 1963 plus 3.
Punjab became the Punjabi speaking area, became the Punjab region. Hindi speaking area became the Haryana region. So Haryana now देखो पंजाब टा ही ऑलरेडी पूरा पंजाब ही थिला तो बाइफर्केशन पर हरियाणा became the 17th state of Indian Union. चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी हिसाब से दिया गला. Hill areas in the Punjab region became the Himachal Pradesh as a union territory only in 1966. Okay. तो ये जो territorial redistribution करागला, this was done under the recommendation of Saha Commission of 1966, which recommended these boundaries. Himachal Pradesh 1966 रे UT हला, तापर statehood पाइला 1971 रे as the 18th state. Now Manipur, Tripura and Meghalaya North East reorganization होइतला. Manipur, Tripura and Meghalaya in 1972. New states, Manipur became the 19th state, Tripura became the 20th state, Meghalaya became the 21st state. Alright, so 22nd Constitutional Amendment Act रे Meghalaya became an autonomous state or sub-state within Assam, but later got full statehood. Okay, so Assam रू ही माने सब कार्व करा हिचंदी. तमरो मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय बहुत बड़ा था असम ताको डिवाइड कराला. ओके, मेघालय 22nd Constitutional Amendment Act रे इट बिकेम एन ऑटोनोमस स्टेट विदिन असम. नुआ नुआ यूटीज कराला 1972 रे. मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, दिस वाज अर्लियर कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, दे बिकेम यूनियन टेरिटरीज. नाउ सिक्किम केस 1974 और 1975, इट वाज ए प्रिंसली स्टेट अंडर चोग्याल. चोग्याल मीन्स ताको किंग को चोग्याल कहा जाती सिक्किम रे. ओके, after 1947 Sikkim became a protectorate of India. Okay, once that state was under India's protection. With the 35th Amendment Act of 1974, this Sikkim became associate state with new article insertion, article 2A and 10th schedule. ये जिनसा मैं already कही तुमको 10th schedule रा idea तुम्हें 52nd Constitutional Amendment Act 1985 रे 10th schedule को introduce कराया था to insert the anti-defection law. But तुम्हारा 35th Amendment Act रे first तुम 10th schedule insert कराया था to give associate state status to Sikkim. But again with 36th Amendment Sikkim को फुल परमानेंट स्टेट कर दिया गला. तमर आर्टिकल 2A और 10 शेड्यूल को ओमिट कर दिया गला अंडर 36th Constitutional Amendment Act. ओके, सो सेम दिन 36th Constitutional Amendment Act सिक्किम बिकेम द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया. 22nd it added the article 371F special provision with respect to Sikkim. It amended the first and fourth schedule, that is true, and repealed article 2A and 10 schedule. Okay, so this is all about Sikkim. तमर 1975 रे referendum हला, people abolished monarchy and joined India. Okay, so this was a democratic process. 1975 रे तमर 36th under the wishes of people that 36th Amendment Act was floated. Now after 1987 रे कौन को सब होइछि, मिजोरम, अरुणाचल and Goa. Mizoram became the 23rd state, Arunachal is the 24th state and Goa became the 25th state in 1987. Mizoram union territory thila, full statehood, it got full statehood after the Mizo Peace Accord in 1986 with Mizo National Front and Government of India. It entered the 20-year insurgency. Arunachal Pradesh UT since 1972, it got statehood in 1987. Okay, Arunachal and Mizoram eka sane statehood पाइचंदी. Goa भी same time रे statehood पाइची. It was separated from UT of Goa, Daman and Diu, and got statehood in 1987. Now Chhattisgarh, Uttarakhand and Jharkhand in 2000. Chhattisgarh was carved out from Madhya Pradesh as the 26th state. Uttarakhand was carved out from UP as the 27th state. Jharkhand carved out from Bihar to separate the tribal areas from Bihar. It became the 28th state. Now Telangana, it 2014 रही. It was the 29th state of India. It was carved out from Andhra Pradesh. So Andhra Pradesh was the first linguistic state that separated Telugu areas from Madras. Andhra State Act 1953 रे it became the first linguistic state. Capital तारा Kurnool, High Court is in Guntur. State Reorganization Act 1956 रे Andhra State रे it included the Telugu speaking areas of Hyderabad state. Okay, Andhra plus Telugu speaking areas of Hyderabad, Andhra Pradesh करा इतला. So capital Hyderabad को shift करा गला. But with the Andhra Pradesh Reorganization Act, it was split into Telangana and Andhra Pradesh. Okay, ये तो मैं जानते just. And Jammu and Kashmir 2019 रे till 2019 JK had special status under Article 370 and its own constitution, but with the constitution application to Jammu and Kashmir order 2019 it abolished Article 370 and Article 35A. Okay, it extended the entire constitution to Jammu and Kashmir. Okay, JK Reorganization Act 2019, it split the state into two union territories, UT of Jammu and Kashmir. It includes all districts except Kargil and Leh, and UT of Ladakh, that is Kargil plus Leh. Okay, so देखो एटा हची तो मैप देखियो. This is POK, Pakistan occupied Kashmir.
एटा हूँ तुम जम्मू एंड काश्मीर, एटा हूँ लेह डिस्ट्रिक्ट, एटा हूँ तुम कारगिल डिस्ट्रिक्ट ओके। लद्दाख इज कंप्राइज्ड ऑफ कारगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट, बाकी जहाँ भी रहा दिस एरिया इज जम्मू एंड काश्मीर ओके। सो सो दिस इज द थिंग। नाउ जस्ट गोटे रिविजन करदे 1956 रे 14टा स्टेट थे, 6टा यूटी थे, 2024 रे 28टा स्टेट एंड 8टा यूनियन टेरिटोरीज। एंड एटा में देखिले 1950 रे यूपी होता यूनाइटेड प्रोविंस बिकेम यूपी, 1969 मद्रास बिकेम तमिलनाडु, 1973 मैसूर बिकेम कर्नाटक ओके। वी हैव सीन दिस थिंग ओके। 69th अमेंडमेंट रे 1991 रे दिल्ली बिकेम नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली, एंड 2011 रे ओडिशा बिकेम ओडिशा। Now just what a comparison between the powers of state and union territories. So states have federal relationship with the center. They have power distribution with center. They have some degree of autonomy under 7th schedule. Under state list, uniform administrative setup. Governor is the constitutional head of the state. Okay, follow his acts on the aid and advice of the chief minister. Then parliament cannot legislate on state list subject except in extraordinary situation. Okay, under article 249. And union territories relationship with center unitary, direct control and administration by center. They don't have autonomy, no uniformity and administrative setup, uniformity nahi okay. Executive head is the agent of president, that is the administrator or lieutenant governor. Chief commissioner ebe nahanti, eta British time re thila okay. Parliament can legislate on any subject in all three list of the union territories okay. ए जिनटा भी देखीचे। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज अंडर पार्ट 8 एटा मन रखियो। पार्ट 8 रे तुम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज अंडर आर्टिकल 239 रो आर्टिकल 241 ओके। प्लीज नोट दिस। सो their duties are governed under article 239 to 241. They are administered by president through an administrator, that is an agent of president and not a head of state okay. तो दी प्रकार एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा तुम दी प्रकार हेड ऑफ स्टेट अच्छा यूनियन टेरिटरी मानकर, गोटे हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर, गोटे हूँ एडमिनिस्ट्रेटर। तो यही जिनसर किसी सेमती किसी बहुत डिफरेन्स ना। एलजी मैंने से अपॉइंट होती जो जो यूनियन टेरिटरी रे तुम लेजिस्लेचर अच्छी, लाइक दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू काश्मीर ओके। यही जिनसटा तुम एलजी अच्छा। अंडमान एंड निकोबार एलजी कौन पाई अच्छा बिकज यहाँ तुम कॉलोनियल टाइम रो ही जिनसटा चली आसी, तो सेठी भी एलजी अपॉइंट कराई, बट एज ए एजेंट ऑफ सेंटर ओनली ओके। सेठी इलेक्टेड असेंबली ना। लद्दाख रे भी तुम इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली ना ओके। बट फॉर द टाइमिंग जेहेतु आगर लेफ्टिनेंट गवर्नर थिले, तो एबे भी लेफ्टिनेंट गवर्नर डेजिग्नेशनटा अच्छी ओके। एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड लक्षद्वीप ओके। एडमिनिस्ट्रेटर ना हूँ एज इफ दे आर बोथ दी हेड ऑफ स्टेट एंड ऑल्सो दी हेड ऑफ गवर्नमेंट ओके। एडमिनिस्ट्रेटर तो जेहेतु ना ही कहूँ से एडमिनिस्ट्रेशन से यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशनटा को पूरा हाथ थाए पाखे। एलजी रो एते पावर न थाए बिकज सेठी इलेक्टेड गवर्नमेंट अच्छा। दे LG acts on the aid and advice of the elected government, but except on the subjects reserved for the LG okay. But administrator तांका पाखे सबू पावर अच्छी, सब एडमिनिस्ट्रेशन सबू पावर अच्छी, but they act through the dictates of the president okay. So this is the case, this is the difference between LG and administrator. बेसी किसी डिफरेन्स ना, जस्ट मन रखीदेव ये जिनटा। यहाँ मे भी पचार दे पारे दिल्ली रे अच्छी असेंबली, पुडुचेरी भी असेंबली अच्छी, जेके रे भी असेंबली अच्छी, तो ये एलजी अच्छा हाँ। अंडमान एंड निकोबार ड्यू टू कॉलोनियल लेगासी एंड लद्दाख ऑल्सो हैव एलजी। बाकी जो सब रहीगला यूनियन टेरिटरी से सब एडमिनिस्ट्रेटर ओके। यूटी विथ लेजिस्लेचर काउंसिल विथ प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम, पौंडीचेरी, दिल्ली एंड जेके यही 3टा ही लेजिस्लेचर अच्छी। एडवाइजरी कमिटीज ओके। एडवाइजरी कमिटी जोटा कि रूल करती यूनियन टेरिटरी उपर। होम मिनिस्टर एडवाइजरी कमिटी फॉर यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, दिस इज चेयर्ड बाय यूनियन होम मिनिस्टर। आउट अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी कमिटी चेयर्ड बाय द यूटी एडमिनिस्ट्रेटर ओके। यहाँ यूटी भितर जिनस यहाँ तुम सेंट्रल लेवल होम मिनिस्टर एडवाइजरी कमिटी ओके। दैट ऑल्सो एडवाइजेस द गवर्नेंस ऑफ यूटी that do not have legislature. This is chaired by Union Home Minister. Administrative Advisory Committee, this committee is within the Union Territory. That committee is headed by the UT Administrator. Now, President can issue regulation for Andaman and Nicobar, Lakshadweep, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu. Okay, these regulations have same effect as Parliamentary Act.
Okay. Now High Court jurisdiction. Delhi is the only union territory with its own High Court since 1966. Okay. Please note this. Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, they are under Bombay High Court. Andaman and Nicobar Islands under Calcutta High Court. Please note this point. Colonial legacy. Chandigarh under Punjab and Haryana High Court, Lakshadweep under Kerala High Court, Puducherry under Madras High Court, Jammu and Kashmir and Ladakh, they have one High Court. Okay, they are shared by J&K and Ladakh. Now, difference in powers. The constitutional status, Delhi is ruled under Article 239AA, Puducherry under Article 239A, Jammu and Kashmir, J&K Reorganization Act 2019, Delhi रे 17टा सीट अच्छी, पुडुचेरी 33टा सीट अच्छी, JK रे 90टा सीट अच्छी. Total एबे फॉर द टाइम बिंग 114 अच्छी, 24 सीट्स आर रिजर्व फॉर POK. ओके, POK रो जो एरिया कोड रिप्रेजेंटेशन पाई 24टा सीट्स रिजर्व करा हिची. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 7 मैक्सिमम एंड पुडुचेरी रो 6 एंड यादरे 9 मैक्सिमम. ओके, सो लेजिस्लेटिव पावर्स दिल्ली रो दिल्ली Okay, Delhi Legislative Assembly can legislate on all subjects except the public order, police and land. This has been reserved for the union government, for the Lieutenant Governor. And Puducherry administration can legislate on state list plus concurrent list. यहाँ टिके wide power अच्छी administration सेमती public order, police land सेमती किसी नहीं. यहाँ पे state plus concurrent list सब थरे सब legislate कर पारिए Puducherry Assembly. JK Assembly can legislate on state list except public order and police plus and concurrent. ये भी state और concurrent list रे कर पारिए except public order and police. Reserved subject police order, public order, police and land. These are reserved for the LG administration to be administered by the union through president. Yankar reserved set general state plus concurrent list. Okay, these are reserved state plus concurrent list माने legislature assembly माने administer कर पारिबे union list रे तमरो center द्वारा reserve रहिला. आउ इथिरे JK रे तांका पई public order, police, bureaucracy, all India service, anti corruption bureau ACB. Okay, this is reserved for the union. Role of LG, it refers to dispute to the president in control over bureaucracy or services. Final say on reserved subject. Reserved subject जहाँ भी अच्छी तारा final say rests with LG. Puducherry LG is less intrusive. Disputes are directly referred to president, and Jammu Kashmir LG has extensive powers, final discretion in governance and judicial function. Okay, financial bills need LG recommendation for introduction in Delhi. Need LG assent for certain financial bills in Puducherry. Need LG recommendation before introduction in Jammu Kashmir. Anti-corruption bureau. So its jurisdiction is limited to Delhi bureaucrats only. Ministry of Home Affairs approval needed to prosecute other central officers. Okay, ये जिनसटा नोट करिवो तमर एंटी करप्शन ब्यूरो रो jurisdiction is limited to दिल्ली bureaucrats only. Okay, बाकी रो दिल्ली रे जहाँ भी सब सेंट्रल ऑफिशियल अछंदी तांको प्रोसिक्यूट करे पई MH मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दरकार. ओके, सेमती किछि एसीबी रो प्रोविजन नाही पॉन्डिचेरी रे. बाकी एसीबी रो कंट्रोल अंडर LG इन कश्मीर. यूनिक फीचर्स 2023 रे गोटे लॉ आस्थला दैट ब्रॉट दी सर्विसेस अंडर लेफ्टिनेंट गवर्नर. ओके, सो एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो रो पावर्स को आहुरी कर्टेल कर दिया था. ओके, अर्लियर इट वाज लिमिटेड ओनली टू दिल्ली ब्यूरोक्रेट्स, बट एबे ताको आहुरी कर्टेल कराया था. सर्विसेस वर ब्रॉट अंडर दी LG. यहाँ यूनिक फीचर इट इज क्लोजेस्ट टू स्टेट गवर्नेंस बट सेंट्रल ओवरसाइट. जमती बाकी आधे एते मॉनिटरिंग नहीं. स्टेट जमती गोटे फंक्शन करे ये यूनियन टेरिटरी को सेमती ऑटोनॉमी दिखाई टू फंक्शन एज ए स्टेट. आउ Kashmir case रे LG appoints the Advocate General controls prosecution and financial matters. Okay, that is the role of LG in Jammu Kashmir. Okay.